Good evening everyone, welcome to Unacademy. So guys, in this session I'm going to start with the numbers theory. So this will be the first session of number. I have divided it in 5 parts, so I'll discuss with you later. Before we start, let me quickly introduce myself. My name is Shyam Jagrut and I have been training the student for CAT and other MBA entrance exams for last 8 years. I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams, and I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. So let's begin, guys. These are the 5 parts I'm going to cover next 5 sessions. The first session will be will include these things: classification of numbers, then modulus, greatest integer value, smallest integer value, factors, LCM HCF, divisibility rules. Second part of the numbers will be power cycle and units place digit, as well as the last 2 digits, right? Then third part will be the revision of cyclicity, and we'll do the remainder theorem mainly. And fourth will be factorial base system, and the last part will be doubt clearing session, in the sense it will be a miscellaneous of all these things. Okay, so here's the first part. Today we are going to do classification of numbers, then modulus, greatest integer value, smallest integer value, factors, multiple, LCM HCF and divisibility rules. So just keep these points in mind. And there are many things to learn over here now, guys. I'm going to cover typical questions, typical CAT question types, जो CAT में आता है उस टाइप के questions हम cover करेंगे. Each and every सब concept पे जो भी मैंने यहाँ पे point out किया है. Just let me check if everything is okay. Okay, so good evening everyone, those who are watching. चलो, let's begin, guys. Those who are new to our channel, quickly subscribe to this channel, Unacademy CAT4MBA. You can also join our Telegram channel, that is CAT4MBA, where you'll be getting the PDF notes of each and every session that we conduct here on YouTube as well as on Unacademy platform. So guys, जिन्होंने Unacademy app download नहीं किया है, if you want to attend my special session, what you can do, you can quickly go to Play Store and download the Unacademy app. So वहाँ पे भी तुम free of cost session attend कर सकते हो, मेरे special session. And if you are willing to go for the plus subscription of Unacademy, then you can use the code SHAM1 to avail 10% of discount. So let's begin, guys. Let's start with the classification of numbers. Okay, so numbers are classified, means अगर तुम यहाँ पे reverse में देखोगे, look at this, counting numbers सबको पता होंगे. I'll start from the end. Sure, don't go from the upside, we'll go downward to upward. Okay, counting numbers 1 2 3 4, infinite counting numbers, right? Then if we include 0 with the counting numbers or natural numbers, तुम इसको बोल सकते हो. Natural numbers के साथ हम 0 include करते हैं, we'll get the whole numbers. Then whole numbers and negative integers अगर हम क्लब कर देते हैं, और whole numbers को ही हम बोल सकते हैं non negative integers भी हम बोल सकते हैं. Then we'll get the set of integers. After integers are, all the integers are rational numbers. Okay, integers as well as fractions. Okay, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ fractions. Then we have other category of number as irrational numbers, and rational plus irrational numbers हमारे बन जाते हैं real numbers. So we need to deal with the real numbers mainly, need not to get into the complex number and imaginary numbers. That's perfectly fine, but for the categorization you can remember imaginary numbers कैसे आते हैं. I square is -1, that is minus square root of -1 you can say, right? That is I. Then irrational number कौन से होते हैं, guys? Root 2, a very famous irrational number we can have is pi. All of you must be knowing. Okay, so irrational numbers जो होते हैं, guys, वो होते हैं non recurring, at the same time non terminating, and rational numbers always terminate or they get recur. The decimal point के बाद का जो digit होता है वो या तो recur होगा या तो number terminate हो जाएगा, right? So let's get to the next thing. Modulus of any number. Now listen, modulus of any number is distance between, देखो, if I want to calculate mod of -3 or mod of 3,
So what I'll do, I'll take two numbers जिनका difference 3 या -3 है. So okay, so let's say I want to calculate mod of 5 minus 2 and -3 को मैं लिख सकता हूँ -5 और 2 minus 5. Just I'll reverse this. Okay, so this comes to be -3, this comes out to be +3. But anyways, इसका meaning क्या होता है? Distance between 5 and 2. The distance between 5 and 2 is 3. And this is distance between 2 and 5, again the one and the same thing. That's why negative number रहे या positive number रहे, mod will be always positive. That's the simple thing you can remember. So mod of x minus a simply means distance between x and a on a number line. Okay, then we have greatest integer value. Let's take some other decimal number. I'll talk about, let's say 3.2, and I want to calculate what is the greatest integer value of 3.2. Okay, now understand, greatest integer value simply means the integer value which is less than or equal to that number. Okay, greatest integer value of x simply means it is always, this value will be always less than or equal to x. ठीक है, depending on if x is a decimal number or integer. If it is integer, integer value will remain same. So देखो यहाँ पे 3 और 3.2 के पास में दो इंटीजर्स है. कौन से? 3 and 4. तो 3.2 के बाजू में जो इससे कम वाला इंटीजर है, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.2 विल बी 3. एंड इफ आई टॉक अबाउट द लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ. लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.2 विल बी 4. So lowest integer value of x will always be greater than or equal to x, right? Okay, and that will be the least possible. Then understand why we call it as a greatest integer value. Basically it means देखो 3.2 से पहले जितने भी integers है, there are many integers, there are infinite integers, in fact माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हो. ये सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है? 3. एंड जो उसके राइट साइड में है उसमें से सबसे छोटा, दैट इज द लीस्ट इंटीजर वैल्यू. So hopefully you understood what is greatest integer value and what is least integer value. So greatest integer value, अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई वैल्यू लेता हूँ, let's talk about -4.5. So greatest integer value of -4.5, greatest integer value चाहिए तो तुम्हें लेफ्ट साइड में मूव करना है. दैट्स इट. लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर दिख रहा है? -4. दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -4.5, राइट? एंड इफ इट इज इटसेल्फ इंटीजर, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3, it will remain 3. Greatest integer value of -3, it will remain -3. If it is integer, need not to go left or right. Decimal number है तो तुम्हें लेफ्ट साइड में जाना है. Will get the greatest integer value, और हम उसको बोलते हैं फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू को. सो लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू द सेम वे, the lowest integer value of let's say 2.4 अगर मुझे कैलकुलेट करना है, the lowest integer value of 2.4 will be 3, which is on the right side, right? Immediate right जो रहेगा that is the lowest integer value. Okay, let's move to the next thing. Let's quickly solve few questions जो मैंने अभी explain किया. You can practice at your own, guys. Mod of 4.2 will be 4.2. This will be again 4.2. Then greatest integer value of 4, तो तुम खुद से चेक करके देखो, तुम्हें बताते आता है क्या. Greatest integer value of 4.2 will be on the left side, right? Greatest integer value will be on the left side, that is 4. Then greatest integer value of -4.2 will be -5. So this comes out to be 7.4. Hopefully you understood this part. क्योंकि -4.2 जो है वो किसके बीच में आएगा?
-5 एंड -4 के बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो -5 आएगा, राइट। देन let's talk about this. Greatest integer value of -5.8 will be -6. Greatest integer value you need to move to the left side. Least integer value you need to move to the right side. So 4 and 5 के बीच में आता है, ये आएगा 5 into greatest integer value of 4.2. It will be between 4 and 5. So left side में आएगा 4 into least integer value of -5.8. This will be between -5 and -6. So right side हमें जाना पड़ेगा, that is -5. So complete division will be multiplication will be positive here. 30 and 20, that has to be 600. Initially these questions are really easy, you can manage at your own. So quickly speed up. Greatest integer value of -5.2 will be -6 का mod यहाँ पे आएगा, then plus you need to solve it at your own and cross check your answers quickly. It should not take more than 30 seconds to solve these questions. This will be greatest integer value of, this will be plus because ये mod है तो 5.2 ही आएगा, right. Greatest integer value of 5.2 will be 5. This will be 6 plus 5, it has to be 11. Next one, least integer value of this difference, 6.2 minus 8.8. It is 2.6. so minus 2.6 आएगा. Least integer value of ये positive ही आएगा, is 2.6. Least integer value of 2.6 has to be 3 on the right side. Next one, see if you can solve this. Let me know in the comment section, guys, if you have any answer. Those who are watching live, they can quickly drop in the comment section if you have any answer. There are exactly 20 integer values x such that mod of x is less than 10. Is it true or false or cannot be determined? Definitely हम बता सकते हैं true है या false है. So if you look at the number line, you can start from, यहाँ पे मैं लेता हूँ 0. हमें पता है लेस देन, mod of x must be less than 10. तो mod यहाँ पे 10 आता है, यहाँ पे -10 पे भी 10 आता है. तो एनी वैल्यू बिटवीन दिस -9 -1 तक, इधर के 10 वैल्यूज, देन 1 2 अप टू 10 तक, ये सारी जगह पे ये mod x लेस देन 10 आएगा. एंड इंटीजर वैल्यूज कितने हो जाएंगे? देयर आर 10 प्लस 10 प्लस एक 0 रहेगा, तो देयर आर 21 एक्चुअली. यहाँ पे 20 लिखा है, सो दैट इज रॉन्ग. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज उसमें 0 एक्सक्लूड हो रहा है, राइट. Then let's move to the next thing. Again a true false questions. If mod of x plus y is less than 20, then mod of x into y is less than or equal to 200. So here the thing is, it looks right because most of the student what they try, अगर मैं यहाँ पे 10 plus 10 भी try करता हूँ, so it will be 10 into 10. That comes out to be 100. That looks true, right. अगर किसी ने कुछ दूसरे वैल्यूज ट्राई करके देखे, ये हमें 20 से ज़्यादा नहीं ले सकते. अगर किसी ने 15 और 5 ट्राई करके देखा, 15 5 75 होता है, इट लुक्स ट्रू. तो यू नीड टू फाइंड सम नंबर्स जहाँ पे ये गलत हो जाए. Can you think of some numbers जहाँ पे ये गलत हो जाए? देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव नंबर्स ट्राई करूंगा, दैट इज द ट्रिक हियर. अगर मैं यहाँ पे -20 ट्राई करता हूँ, यहाँ पे +10 ट्राई करता हूँ, -20 +10. ओके, आई एम ट्राइंग दिस वैल्यूज एंड डेफिनेटली ये -10 आएगा. तो -10 का मॉड डेफिनेटली लेस देन 20, दैट इज ट्रू. देन यहाँ पे अगर तुम ट्राई करोगे -20 into 10, दिस विल बी 200.
राइट। तो देखो मैंने 200 तक लाने की कोशिश की। अगर मैं दूसरे कुछ नंबर्स ट्राई करता हूँ, -30 + 20, again this will be mod of -10, एंड अभी अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे -30 × 20, दिस विल बी -600, और -600 का mod will be 600, which is greater than 200, so this is false. Again, you can say it is definitely false. We cannot conclude this. If this, then this is a wrong thing. Okay, so let's move to the next thing. So this was related to modulus, then greatest integer value and the lowest integer value. Quite often important है ये थोड़ा सा. Okay, now let's talk about this question. This is simple, a common sense based question, numbers related. So I have not yet started with the LCM HCF and factors, so we'll solve few questions. I'll take one puzzle in between, and after that we'll move to the next thing, because आज हमें काफी सारे small concepts याद रखने हैं. So be with me for next 1.5 hours. It will take close to that. Okay, so if n plus 2 and n plus 4 are prime numbers, then the number of possible solutions for n, तो ये प्राइम नंबर्स है, तो यू कैन इजीली मेक आउट, दो का डिफरेंस आना चाहिए. तो डेफिनेटली अगर मैं 3 ट्राई करता हूँ, 3 + 2 इट हैज टू बी 5. लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल प्राइम नंबर्स. देन 2 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, +2 + 2 दो बार हुआ है, देन 7. तो 3, 5 and 7. After that you won't get these the 3 consecutive prime numbers, as simple as that. So answer is only 1. Let's move to the next one. If n square is a perfect cube, quite interesting question guys. I recommend all of you to try at your own and then go ahead with the explanation. N square is a perfect cube, then which of the following statement is always true? N square is a perfect cube, so one number I can think of is 1 square is 1, and which is a 1 cube, right? Then next number, if you think of any number, tell me. You can drop in the comment section if you think of any number जो ये properties satisfy करे, or if you have any answer option, you can drop me in the comment section if you have any answer for this question. So n square is a perfect cube, so tell me a perfect square number which is a perfect cube as well. वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, एंड दैट शुड बी अ परफेक्ट क्यूब. अगर मैं 2 क्यूब ट्राई करता हूं तो 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. Then 3 cube is 27, which is not again a perfect square number. But if I try 4 cube, we know it is 64. Then 64 is 8 square. So n square is a perfect cube. So this is n square, right? So if you look at this, then which of the following is always true? N is odd, is it right? N is odd. N यहाँ पे कितना हुआ? This is n square. Okay, this is n square, means this is 8 square. So n basically 8 हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे n कितना हुआ? 1 हुआ. तो odd है या even है ये तो कुछ surely नहीं बता सकता है. n cube is a perfect square. N cube is a perfect square and n is a perfect cube. Which one is right? N is a perfect cube. So this is going to be the right statement. N cube, n is a perfect cube, because if you try for any perfect cube number, let's try for one more number. 5 cube is 125, which is not a perfect square. 6 cube is 216, not a perfect square.
7 cube is 243. 8 cube is 512, is not a perfect square. देखो इन दोनों में से हमें चूज करना है n is a perfect cube and n cube is a perfect square. So definitely this has to be correct here. N is a perfect cube. Just a minute. यहाँ पे n का वैल्यू 1 आ रहा है. This is n square. N square is a perfect cube. N square is a perfect cube. Then अगर n square किसी का क्यूब है, a क्यूब है, तो n का क्यूब this has to be 3/2. Then this is not true, so I'll go for this. N is a perfect cube. Look at any number. So if you go for any such number, that number has to be a perfect cube. That's the simple thing you can conclude here. Okay. Let's move to the next thing. You can try if you want to try. Quickly try it, guys. If 5x plus 11y is a prime number, for natural number, this is a prime number. For the natural number values of x and y, then what is the minimum value of x plus y? Can it be 1? Can it be 2? 2 अगर लेना है तो मुझे 1 और 1 ही लेना पड़ेगा. So 5 plus 11, it is not even possible. Okay, if I try for 3, it can be 1 2 or 2 1. That's what I can try, right? So अगर मैं 1 और 2 ट्राई करता हूँ तो ये तो 27 हो जाएगा, which is not right. और मैं 2 और 1 ट्राई करता हूँ, it will be 10 plus 11, that is 21. Not possible again. फाइव प्लस 22 27 हो रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है. So now for 4, I can try for, I want to try for 5x plus 11 5. अब देखो 4 लाने के लिए मैं 1 3 ले सकता हूँ, 3 1 ले सकता हूँ, या तो मैं 2 2 ले सकता हूँ, right? If I try for 1 3, 33 plus 5, no. 3 1, 15 plus 11, no possible. ऑड नंबर्स बन रहे हैं दोनों, तो डेफिनेटली ये आएगा ही नहीं. दोनों ऐड नंबर ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव. अगर मैं 2 2 ट्राई करता हूँ, दैट वोंट बी पॉसिबल अगेन. So it is not even 4 is not possible even. Hi Prasanna, how are you? Can you answer this question, Prasanna? So after this puzzle, after this question, we have a really interesting puzzle with us. Okay, so answer is 5 definitely. And which is that prime number? If I take 3 here, 33. Sorry. Just a minute, my mistake.
इफ आई ट्राई फॉर 4 में मैंने गलत किया, 5x प्लस 11y था, तो हमें 1 और 3 अगर हम ट्राई करते हैं, 33 प्लस 5 इज 38. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. देन लेट मी क्विकली चेक. 3 and 1, that is not possible. But if I try for 5, then I can say 5x plus 11y. I'm not sure if I'm able to see the comments or not. Hi Prasanna, are you there? Okay, अगर मैं 2 और 3 कुछ ट्राई करता हूँ, so this will be 10 and this will be 33. So definitely that is possible. 43 possible है, so that is quite easy. Let's try for this puzzle. Those who are watching live, they can quickly drop in the comment section, guys, if you have any answer. Okay, so here's the puzzle. 10-digit number. Let me quickly explain the question to you so that you'll be able to try it. A 10-digit number where the first digit is how many zeros in the number. So whatever this digit is, यहाँ पे अगर 5 होगा, that simply means, if it is 5, that simply means there must be 5 zeros. I'll just talk about random. I'll take a random number so that you'll understand. Okay, now the second digit represents ones, so this represents ones, this represents zeros. Ones जो है वो zero means there is no 1 in this number, there is no 2 in this number, there is no 3 in this number. If I put this 5, this digit as 0, there won't be any 4, there won't be any 5. Okay, but the problem is यहाँ पे हमने 5 लिखा है, so this digit cannot be 0, it has to be 1 because this represents 5s, right? So you need to put 0 somewhere else. So even if you take 1 here, that simply means 1 0 नहीं हो सकते. You're using 1 there. This cannot be even 1 because there will be 2 1s here. So you need to satisfy these conditions. So let's see if you have any answer. Quickly drop in the comment section. See if you can try. So guys, the main thing you can observe here is हमें ज़्यादा से ज़्यादा number of zeros ज़्यादा लेने पड़ेंगे, and the reason being, let's say I'll try, if I try 0 just one time, that means 1 must be there. Let's try 1 for one time. So definitely this is not possible because 1 एक तो तुम 2 बार ले सकते हो या तो 1 बार. So let's try for 1 for 2 times and I'll take 2 ones. Okay, now this will mean there must be 1 0. This represents zeros, this represents ones, this represents twos. So twos तो आ गया. Now this will represent threes. Okay, this will represent, there must be 1 0, so I'll take 0 here. There won't be any 3 now. Okay, यहाँ पे 2 ones. Then अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, this means there will be 4 4s. That simply means मुझे 4 लेने पड़ेंगे 4 बार. Right, now this means 5s, this means 6, this means 7s. It is not even possible. इतने सारे तो places ही नहीं बचेंगे हमारे पास, right? So even if you try a digit once, any digit once, that is not possible here.
So what I can conclude is in this number there are maximum number of zeros. So if I try for maximum number of zeros, let's talk about 9 zeros. What's wrong with this? Most of the students find this answer as correct, but this is not the correct answer, because 9 zeros, that is perfectly fine, but the last digit represents the number of nines, and here it is written 0 and you're using 9. That means that is the contradictory statement, right? So that's why you need to put 1 here. अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो प्रॉब्लम है कि 1 की जगह पे भी तुम zeros नहीं रख सकते हो फिर, right? So that's a big contradiction here. So I cannot go for 9 zeros. Let's try if we can go for 8 zeros. 8 zeros के लिए अगर मुझे ज़्यादा zeros चाहिए तो मैं 8 zeros ट्राई कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ तो मुझे 8 zeros लेने पड़ेंगे. Now understand one thing, this digit represents 8s, so it has to be 1. Okay, this digit represent ones, it cannot be 1 because 1 लिखोगे तो 2 बार आ जाएगा. So I'll write it as 2. Then this represent 2s, so 2s must be 1 time. But the problem is then there won't be 8 places. We are just left out with 1 2 3 4 5 and 6 places, and we have written here 8 zeros won't be accommodate. We cannot accommodate 8 zero at just 6 places, so we cannot have even 8 zeros, right? गुड इवनिंग जगदीप, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया क्या ये जगदीप? आई कैन नॉट राइट 9 हियर, आई कैन नॉट राइट 8 हियर. यहाँ पे एक लॉजिक है कि ज्यादा से ज्यादा हमें 0 रखने पड़ेंगे. सो आई ट्राई फॉर 7 zeros इफ इट इज पॉसिबल. अगर मैं यहाँ पे 7 ट्राई करता हूँ, दिस विल रिप्रेजेंट zeros. नाउ 1 2 3 4 5 6 and 7, this digit must be 1 because this represents 7s और हमने 7 यूज किया है. now हमने 1 यूज किया. now the second place represent ones, right? is that clear? second place represent ones, so we cannot write 1 here because 1 तो 2 बार हो जाएगा. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार 1 लेते हैं एंड 2 को एक बार लेते हैं. दैट्स द पॉसिबल वे. बट अगेन 4 प्लेसेस हो गए तो 6 zeros बचेंगे. दैट वोंट बी पॉसिबल विथ 7 ऑल्सो. सो व्हाट वी कैन गो फॉर नाउ, वी कैन टेक 6 zeros. सो नंबर ऑफ zeros आई विल टेक इट एज 6. ओके, जैसे दिस विल रिप्रेजेंट ones, दिस विल रिप्रेजेंट twos, दिस विल रिप्रेजेंट threes, this will represent number of fours, this will represent number of fives, and this place will represent number of 6. and number of 6 मुझे लेना पड़ेगा 1. और जैसे ही 1 हमने लिया मीन्स 1 की जगह पे 1 मत लिखो बिकॉज 2 बार हो जाएगा. सो व्हाट आई राइट, 1 2 टाइम्स लेते हैं एंड 2 को 1 टाइम लेते हैं. दैट्स द एडजस्टमेंट. सो एवरीथिंग इज ओके नाउ. then this will represent 7s, this will represent 8s, this will represent 9s. understood this part? so I can put zeros here. a really logical question. so this is your answer. so this means there is no 3, there is no 4, there is no 5, there is no 7, there is no 8, there is no 9, and there is 1 6. there are 2 ones, there is 1 2, and there is 1 there are 6 zeros. have you understood this? Jagdeep, clear? Prasanna? Let me know if there is any confusion. Okay, let's move to the next thing.
ओके गाइस, सो अभी मैं सिखाने वाला हूँ LCM HCF के कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं. आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट टीच यू हाउ टू कैलकुलेट द LCM, हाउ टू कैलकुलेट HCF. I'll take you through that if you have any confusion related to that also. But that will be a quick part. We won't be spending too much of time on how to calculate LCM and all. The main thing is we are going to solve the questions which are actual CAT level. Okay. At the same time, I'll brief you about some key points जो तुम्हें याद रखने चाहिए. So before starting with LCM HCF and number of factors and sum of factors, these are the things I'm going to discuss with you in next hour. चलो, so prime numbers क्या होते हैं guys? सबको पता है, a number which has exactly two factors. The number which has exactly two factors, one itself is not a prime number because one को कितने दो factors नहीं है, right? One has exactly one factor. Then 2 के लिए दो factors है, 2 is divisible by 1 and 2, 3 is divisible by 1 and 3, 5 is divisible by 1 and 5 itself. So all the prime numbers are divisible by 1 and itself only. So these are the prime numbers and hopefully all of you know ये 1 to 100 prime numbers CAT में बहुत useful है. Okay, and from 1 to 100 how many prime numbers are there? There are 25 prime numbers out of which 50 तक 15 numbers है, उसके बाद में सिर्फ 10 है. Here 15, उसके बाद 10, total there are 25 prime numbers. Next thing, you need to know how to check if a number is prime. Let's say मुझे check करना है 127 if it is prime or not. So first thing you need to do is take the square root of 127. 127 का square root कितना आएगा guys? 11 square is 121. This a number close to 127, which is a perfect square, is 121, right? So approximately this will be 11 point something, right? So tell me the prime numbers which are below that number, below the square root of the numbers 2, 3, 5, 7 and definitely 11. So it is not divisible by 2. 127 is not divisible by 3. It is not divisible by 5. It is not divisible by 7. It's not divisible by 11. So 127 is a prime number. That's how you can check if a number is prime number or not, right? Jagdeep, you can go for these properties as well. 6k plus 1 or minus 1, that is also the case, can go. Just I'm talking about normal division. अगर तुम्हें करना है तो तुम इसका स्क्वायर रूट के लिए ट्राई कर सकते हो, और स्क्वायर रूट के नीचे जो भी प्राइम नंबर्स है वहां तक वो किसी से भी डिवाइड होना चाहिए नहीं, right? Then let's talk about factors and multiples. These are quite basic thing guys, so I won't take too much of time. अगर मैं 12 के फैक्टर्स अगर तुम्हें बोलूंगा, 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स, फैक्टर्स सिंपली मीन्स डिवाइजर्स, राइट? सो जो भी नंबर 12 को डिवाइड करते हैं 1, 2, 3 and 6, these are the factors of 12. Even 12 itself is a factor. So how many factors for 12? 12 के फैक्टर्स अगर चाहिए तो सारे 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself, all these are factors. and अगर 12 के मल्टीपल्स चाहिए या फिर यहाँ पे 6 के लिए लिखा है, I'll talk about 6 only, just a minute. Factors of 6 is 1, 2, 3 and 6, and multiples of 6 में क्या आएगा? 6, 12, 18. मल्टीपल्स इनफाइनाइट रहेंगे, फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड रहेंगे. फैक्टर्स, a number itself is always a factor of itself. Then next thing, how to calculate the LCM HCF. So let's understand what exactly the LCM is. So guys, अगर मैं तुम्हें 12 और 18 के फैक्टर्स के बारे में पूछूं तो these are the factors of 12 and 18. So if I want to calculate
SCF, that is highest common factor. तो यहाँ पे factors में से जो भी common आता है, whatever common in factor, so which is the highest common factor, SCF has to be 6. And if I talk about multiples, अगर मैं multiples लिखूंगा, infinite multiples है, तो 12 and 18 के कुछ common multiples हमें मिलेंगे, like 36, 72, and there will be infinite multiples, right? So there will be infinite multiples. 108 आएगा, then 144 इधर आएगा, 144 इधर भी आएगा. So there are infinite common multiples, out of which the least common multiples, LCM, is 36. This is the simple thing related to LCM and SCF you can have. Let's move to the next thing. How to calculate the LCM and SCF. So all of you can easily make out this is the SCF, and if you want to calculate LCM, you need to multiply all these, right? Common and uncommon, this is how you can remember. The other thing and important easiest thing to do is SCF is the product of common prime factors. So whatever common, that is the product of common prime factors, is SCM. And LCM is the product of highest power prime factors. I'll tell you a small trick. तुम common into uncommon भी कर सकते हो, और the other way of doing it is, यहाँ पे 2's कितनी बार है? 3 बार. तो मैं लूंगा 2 cube into 3 कितनी बार है? 3 square and into 5, whichever is the highest power that you need to take. So hopefully all of you must be knowing how to do this. That's not a big deal to calculate LCM and SCF. The important thing is ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ so that you will be very clear about this thing, so that जब हम actual में high level difficulty question करोगे, so you will be very clear about what is LCM and what is SCF. That's what the motto is, and I'm quite sure most of you must be knowing how to calculate the LCM and SCF, and if not, do some practice. That's the easiest thing you can have. So let's move to the next thing. What happened, Jagdeep? Prime factorizations तो करना ही पड़ेगा. Prime factorization के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? Divisibility rules आने चाहिए. You need to be very quick. If a number is divisible by 2 or 4 or 8, then 3 or 9 के लिए तुम sum of the digits use कर सकते हो, right? Okay, so do you know what is coprime? What are coprime numbers? Can you tell me a pair of coprime? Any pair of coprime? If you know, quickly drop in the comment section if you know any pair of coprime. अगर तुम्हें coprime का मतलब पता है तो. Yes, you got it. Okay, so coprime numbers क्या होते हैं? Numbers whose SCF is 1. Numbers जिनका SCF 1 है, we call these numbers as coprime numbers, और इन्हीं के लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, that is relatively prime number. Okay, coprime or relatively prime. Okay, right. 5, 6, 10, 11. Always remember this thing. Quite interesting thing related to coprime. 2 consecutive numbers are always coprime. 8, 9, ये सारे coprime numbers है. If you calculate any SCF of any number, SCF will remain 1. Any of this pair, SCF will be 1. And coprime numbers का LCM जो है वो definitely क्या आएगा? LCM इनका multiplication आएगा. LCM will be 30. Here LCM is 110. Is it necessary to have consecutive numbers, then only it is coprime? Is it necessary to have a consecutive pair of a number? We can, it is not necessary. We can have other numbers as well, like 16 and 25. So 16 is 2 to the power 4 and 25 is 5 square. So SCF will be 1, and LCM will be simply 16 into 25. That comes out to be 400.
What do you mean? The difference between co-prime and prime? Prime you mean to say? What is the difference? They are both same. No, no, no. That is not same, Jagdeep. See, prime numbers are different. Co-prime numbers are not prime numbers. Look at this. Are these prime numbers? 5 और 6 ये दोनों prime numbers है क्या? No. Co-prime and prime numbers are different. Means what is the difference exactly? अगर तुम ये पूछो, ये बोल रहे हो कि दो प्राइम नंबर्स सर को प्राइम है क्या? राइट, दैट इज को प्राइम. 5 and 7 आर को प्राइम. These are two prime numbers as well as they are co-prime. Definitely दो prime numbers लोगे तो HCF 1 आएगा. That means two prime numbers are always co-prime. Understood that? Jagdeep, two prime numbers are always co-prime. Okay, but two co-prime numbers are not necessarily prime. They may be prime, they may not be prime because 16 and 25 भी co-prime का pair है, but वो prime numbers नहीं है, right? But if you talk about the prime numbers, अगर मैं 19 and 17 लूंगा तो definitely ये prime भी है as well as these two are co-prime to each other. Co-prime simply means their HCF must be 1. Doesn't matter वो prime है, composite है या दोनों composite है, एक prime एक composite है, that's perfectly fine. Yes. Okay, then next thing, number of factors. This is really interesting and important thing I'm going to teach you today. That is how to get the number of factors and the sum of factors. I don't know if you know this or not. If I say I want to calculate I want to answer this question, how many numbers from, let's talk it in a normal language, let's not calculate, no, talk about the number of factors and all. Simple question guys, 1 to 500, how many numbers from 1 to 500 can divide 500? That simply means divisors ढूंढना है. Divisors मतलब हमें क्या ढूंढना है? Divisors are nothing but the factors. So 500 के number of factors. So how to get how many numbers from 1 to 500 can divide 500? Do you know any trick to calculate this? Guys, if I want to solve this manually, how I can do this is, how can I do this? I need to write starting from 1, 2, then this will be quite tough and I'm quite sure इसमें कुछ ना कुछ miss हो जाएगा. So what I'll do, I'll use the prime factorization also. चलो थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं so that और भी इजी हो जाएगा. 500 कैन बी रिटन एज 5 into 10 into 10. That simply means it is 2 square into 5's cube. So any answer for this question? Quickly drop in the comment section if you know the count. How many numbers from 1 to 500 can divide 500 completely? Any idea about this? If not, look at the screen quickly. देखो numbers अगर मुझे लिखने तो मैं numbers भी लिख सकता हूँ 1, 2, then 4, then I can have 5, then 10, 20, then 25 हो सकता है. After that 50 I can have 50, then 100, 125, 250 and 500. You don't have any idea about this? Yes or no?
So those who don't know how to calculate it, so there is one simple thing. I'll tell you the reason behind that as well, and we are going to remember that as a formula. Yes, there is other way to do this. The other way of doing this is, so no, how this number came, ये number आए कैसे? Listen, यहाँ पे 2 का पावर कितना है? 2 स्क्वायर है. So you can choose any power of 2 from 0, 2 का power 1 and 2 square. So here is the shortcut, Jagdeep. Listen, 2 to the power 0, 1, 2. How many choice do I have? How many choice do I have? I can select any of this. 2 का power 0 मतलब 1. ये नंबर बनते कैसे हैं? यू कैन चूज अ पावर ऑफ 2 एंड अ पावर ऑफ 5. 5 के पावर्स में मेरे पास कितने चॉइस है? 5 टू द पावर 0 ले लो, या तो 5 का पावर 1 लो, या 5 स्क्वायर लो, या तो तुम 5 क्यूब लो, एंड यू कैन मेक नंबर्स यूजिंग दिस. ओके, सो हाउ मेनी नंबर्स कैन आई गेट? मैं 2 के पावर 0 के साथ मेरे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 के पावर 1 के साथ मेरे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. एम आई राइट? देन इसके साथ मेरे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. So how many total numbers I'll be getting? It is 3 choice for 2's power and 4 choice for 5's power. So 3 into 4. What's the count? So if we count these numbers, there will be exactly 12 numbers written over here. 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So how many numbers from 1 to 500 can divide 500? Answer has to be 12. Have you understood the logic? Will you be able to remember this? Right? Let me know in the comment section if you have any doubt. Yeah, got it. Okay, now listen, one more thing I want to emphasize is most of the time ये book में formula भी दिया होता है, and I have just shown you the reason. If a number a and if a number n has prime factors a, b, c and उनके powers है p, q, r. So what will be the number of factors where a, b, c are prime? A, b, c are prime numbers, means this is the prime factorization. Okay, then the number of factors of n must be equal to p plus 1 into q plus 1 into r plus 1. Understood this? P plus 1 into p plus 1 into q plus 1 into r plus 1. That's the formula. You can remember y plus 1 because we start from a to the power 0, a to the power 1, a to the power 2 till a to the power p. So there will be a to the power 0 से जब हम start करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 का square था, तो power में plus 1 कर देना है. Okay, that's the shortcut you can remember. Power में क्या है? 2 plus 1 and यहाँ पे क्या आएगा? पावर कितना है? 3 plus 1. So 2 plus 1 is 3 into 4. That comes out to be 12. Sorry. Understood that? Okay. That's the simple thing. Okay. Now, if I want to add those factors. Okay. Let's talk about this. Now, how to add this? What will be the sum of all the numbers from 1 to 500 which can divide 500 completely? Now अभी हमें पहले सिर्फ काउंट पूछा था कि टोटल काउंट कितना है, राइट? Now I need not to count that. I want to add all those 12 numbers. I know that is 12 कि ये 12 numbers आएंगे 500 को डिवाइड करने वाले, राइट? 500 is 2 square into 5 cube. Okay, so I want you to remember 2 formulae now. Okay, 2 formulae मैं बताता हूँ.
क्या फॉर्मूला है? So sum of factors, I'm not going to write the formula, I'll just directly tell you what to do. Sum of factors is always equal to, यहाँ पे जो नेक्स्ट पावर लेना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर के बाद 2 का नेक्स्ट पावर क्या है गाइस? द नेक्स्ट पावर ऑफ 2 विल बी 2 क्यूब, और उसमें से -1 कर देना है अपॉन 2 - 1. आई एम क्वाइट श्योर किसी को जीपी याद होगा तो पता होगा वो क्या है. एंड देन सेम थिंग फॉर 5. व्हाट इज द 5 नेक्स्ट पावर? 5 क्यूब के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ 5 विल बी 5 to the power 4 -1 upon 5 - 1. Is that okay? Understood this shortcut? 2 cube minus 1, it is 7 upon 1. Is it okay? The next thing, I'll tell you what's the reason behind this. ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों ऐसे किया. Okay, then 5 to the power 4, 5 square is 25, 25 square is 625, 625 minus 1 is 624, divide by 5 minus 1, it has to be 4. तो कितना आएगा? 156 into 7. 7 6 are 42. Carry 4. 7 5 are 35. This should be 9. So answer should be 1092. Is it okay? Understood this shortcut? Yes or no? So if you want to cross check कि 1092 सही है या नहीं, मैंने ये factors लिखे भी हैं actually, so you can add all these numbers. So let me quickly check if it is right answer. So this is 750, this is 225, 700 और 200 हो गया 975. Then 25 में ऐड कर देता हूं, ये हो गया 1050 हो गया यहाँ तक, 1070, 1080, 1090 and 1092. Is it right? Yes, that's perfectly fine. If we add all these numbers, that comes out to be 1092. That's the right answer. So need not to write these numbers. Understood the shortcut? Is there any doubt? Shall I share one more shortcut related to this? One more method you can do. Basically that is, ये कैसे आया इससे पता चलेगा. Ready for the next thing? Yes. Okay, so what you can do is, ये कैसे आया सुनो. This is nothing but summation of GP. ये जो 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर तक के सारे पावर्स ऐड करो. चलो चलो क्विकली ऐड. 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 square. What's the addition? Addition must be 7. Then उसके बाद सारे 5 के पावर्स ऐड करने हैं. 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 plus 5 square plus 5 का cube. What is the addition? Understood this? And 7 into 156 need to multiply. So answer is 1092. This is how you can remember. So basically ये दो GP का multiplication रहता है. That's what you need to remember. This is nothing but the geometric progression, and ये GP के addition का formula है.
अगर तुमने प्रोग्रेशन किया होगा, दोज हु नो व्हाट इज प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाउ टू ऐड द नंबर्स इन जीपी, उसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे ये सॉल्व हुआ है, राइट. इफ नॉट, तो जब तुम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम करेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा वापस से. यू विल बी getting revision of this. Okay, so for now you can remember this as a shortcut and use this, right? So what all we learned up till now is how to get the LCM HCF. तो हो गया. उसके बाद हमने क्या सीखा? प्राइम नंबर सीख लिए, को प्राइम नंबर सीखा, देन हमने रिलेटिव प्राइम इज नथिंग बट द को प्राइम, देन हमने देखा नंबर ऑफ फैक्टर्स, देन वी आर डन विद द सम ऑफ द फैक्टर्स, right? And before that, when I started the session, I have taken you through the classification of the numbers, then greatest integer value, lowest integer value, what is modulus. That was quite simple part initially. So these are the key points you need to remember. This is not the complete number, guys. This is the just first session of number. Okay, so बाकी चीजें जो है रिमाइंडर, साइक्लिसिटी एंड वो सब हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे. ओके, सो दिस इज नॉट डन, वी आर नॉट डन फॉर द डे. हम आगे अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं. टीचिंग पार्ट इज सम और हाउ इज डन, मोरलेस थोड़ा सा कुछ और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स रहेंगे. आई विल बी टेकिंग यू विद द क्वेश्चंस ओनली, बट क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है एंड मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है आज जो हम करने वाले हैं वो. क्लियर? complete CAT oriented question. Okay, so remember this is the thing just I have taught you, that is number of sum of the factors. Is there any confusion related to this number of factors and sum of factors? All clear? Because abhi ye aage use karna hai and you need to answer the questions at your own and you should be able to do that. Okay, ready for the questions? What happened? What's the problem? Okay, you don't have any doubt, that seems right. Okay, so here's the first question. Let me I don't think मुझे कुछ भी explain करने की जरूरत पड़नी चाहिए अभी इस question के लिए at least. So what is the smallest number that has exactly 12 factors? So answer option से जाओ, सबसे छोटा number pick करो. Which is the smallest number? 60. If I go for 60, 60 is 2 square into 3 into 5. Number of factors अगर मुझे चाहिए तो 2 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1. That's simple question, straightforward formula. And ये formula कैसे आया तुम्हें पता होना चाहिए. 4 into 3, it has to be 12. So 60 is the answer only. Is that right? You got it? 60. ये तो हो जाना चाहिए था अभी, right? All clear? So level will go on increasing now. ठीक है, this was just a trial question तुम बोल सकते हो, just to understand. तुमने number of factors तो याद है अभी, sum of factors तो just मैंने अभी करवाया था, right? Yeah. So let's go for the next. Try. I'm not going to solve it now. You need to apply the logic and tell me the answer. How many factors of 1080 are perfect square? So this is how the question comes in CAT. तुम्हें number of factors पता है, sum of factors पता है, उसको थोड़ा सा twist करके पूछा है. Now you think at your own कि हमें ऐसे factors चाहिए. पहले तो ये निकालो कि total factors कितने बनेंगे. तो अगर ज्यादा factors ही नहीं होंगे तो तुम तो manually भी बता सकते हो कि कौन से factors आने वाले हैं, right? You can think about it. चलो quickly do it. And definitely you can try, you can manage this question at your own. How many factors of 1080 are perfect squares? I'll just factorize 1080 for you.
1080 is 108 into 10. I can write it as 100 into 10. 108 is 27 into 4. So this is 2 square, this is 3 cube. Three cube into 2 cube into 5. What's the answer? कौन से परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स आएंगे बताओ. चलो तुम मैन्युअली भी बता सकते हो गाइस. इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो रहे हैं? 4 इंटू 4 इंटू 2, राइट. 32 फैक्टर्स है वैसे तो, बट लुक एट द आंसर ऑप्शंस. How to get the perfect square factors? 2 to the power 0, 2 का power 1, 2 square and 2 cube. That is the maximum choice. Then 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 square, 3 cube. Then 5 to the power 1, 5 to the power 0. तो हाँ, वो तो टोटल फैक्टर्स तुम बता रहे हो 32. आई डोंट वांट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हमें सारे फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए. तो देखो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो भी होंगे गाइस, जो भी नंबर्स इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे, दैट सिंपली मींस उसमें 5 तो तुम ले ही नहीं सकोगे, क्योंकि 5 या 5 का पावर 0 तो ले सकते हो, दैट इज 1, बट इनटू 5 तो नहीं होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. how is it 8? Can you tell me which are the 8 factors? कौन से 8 factors से बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है? बोलो, तुम्हें 8 आंसर लग रहा है? How is it 8? I don't think it is 8. तुम सोच नहीं रहे हो गाइस, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, इट्स रियली इजी क्वेश्चन. वापस सोचो, वापस गाइस, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था. मोर देन सफिशिएंट हिंट्स मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है. यू नो द नंबर ऑफ फैक्टर्स 32 रहेंगे, ये भी तुम्हें पता है. तो उसमें से चलो एक काम करो, फैक्टर्स लिख के देखो, कुछ फैक्टर्स लिखो. कौन से नंबर्स फैक्टर्स आएंगे? कृष्णा 149. यस परफेक्ट. तो प्रॉब्लम ये हो रहा है, तुम्हारा आंसर 3 आ रहा है, राइट, और आंसर ऑप्शन में 3 दिया नहीं है. तो अगर आंसर ऑप्शन में 3 होता तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट हैव मार्क्ड आंसर एज 1, 4 एंड 9. एक और नंबर है, बोलो कृष्णा. जगदीप, संगम. There's one more number that's really simple, you can think of easily. तुम सही जा रहे हो. 149 तुमने सही निकाला. परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनेंगे 36, राइट. देखो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर तुमने पिक किया. देन 2 टू द पावर 0, ये तो चलेगा. 1 तो चलेगा, 1 तो हमने पिक किया बिकॉज 1 इज स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर. देन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, दैट इज 6. तो ये 4 ही नंबर्स ऐसे रहेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे. देयर वोंट बी एनी अदर परफेक्ट स्क्वायर. अगर तुम वो 32 फैक्टर्स को लिखोगे, उसमें से ये 4 आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, 1, 4, 9 एंड 36. दैट इज मैन्युअली तुम मैनेज कर सकते हो. ऐसा क्वेश्चन था ये. इट्स नॉट अ बिग डील टू आंसर दिस क्वेश्चन. आंसर इज 4. किसी ने रैंडमली 8 आंसर दिया. All of you understood guys? Give me a thumbs up if you understood. If you have any doubt, quickly let me know. That was an easy question, not tough at all. अभी tough questions तो आगे चलेंगे. Done? All of you ready for the next question?
Let's move to the next one. Understood. Okay. So here's one more question. A number n square has 15 factors. How many factors n have? सोचो, अभी सबको पता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला भी बता दिया है. Each and every one of you know how to get the number of factors. So if you know that's the only thing you need to know here, number of factors, and थोड़ा सा तुम्हें consciously trial and error observation के साथ करना है properly without any mistake. Think twice, that's perfectly fine, but try to answer this correctly. Okay, so n square has 15 factors. How many factors n have? देखो गाइस, n स्क्वायर को 15 फैक्टर्स है, तो 15 फैक्टर्स कैसे आया होगा? कैन यू टेल मी अ नंबर जिसको 15 फैक्टर्स है? Is it 4 or 6? Okay, Jagdeep got it. Answer option 3. Okay, let me check. N square has 15 factors. No, it is not C. Jagdeep, it is not C. तुमने आंसर 144 दिया. चलो 144 के फैक्टर्स चेक करते हैं. इट इज 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर. कहाँ पे है 144 के फैक्टर्स? 144 को 15 फैक्टर्स आएंगे ऐसे लग रहा है तुम्हें? ओके, राइट, सॉरी. 5 into 3. Yes, perfect. My mistake. 5 into 3, it is 15. Okay. So, but the problem is, फिर 12 को कितने फैक्टर्स हो रहे हैं तुम्हारे जगदीप? 12 को फैक्टर्स आ रहे हैं 2 square into 3 and you got it as 3 into 2. It has to be 6. जगदीप तुमने क्या किया? ये 6 देख के आंसर दिया. ये 4 कहाँ से आया? 4 तो तुमने चेक ही नहीं किया होगा. What about that 4? Okay, Krishna, I'll repeat the formula once. Okay, listen, Krishna, if a number n और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है a to the power p into b to the power q into c to the power r, then the number of factors are always equal to p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 and so on. ये आगे भी जा सकता है, बट एक चीज ध्यान में रखना है जगदीप, कृष्णा, यहाँ पे a b c, ये जो बेस में नंबर दिख रहे हैं ना तुम्हें, a b c, दिस ऑल मस्ट बी प्राइम नंबर्स, और सिंपली आई मीन टू से this must be a prime factorization of that number. Is that okay? Understood that formula? I think I need not to repeat again. इसके बाद रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. एंड दैट्स नॉट अ फॉर्मूला, दैट इज बेसिक्स ऑफ काउंटिंग गाइस. ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट फॉर्मूला है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है. सो कृष्णा, इफ यू ऑलवेज कीप ऑन फॉरगेटिंग दिस फॉर्मूला, गो एंड वॉच दैट पार्ट. जस्ट मैंने 10-15 मिनट्स पहले ये एक्सप्लेन किया ये फॉर्मूला कैसे आया. ओके, इज दैट ओके? सो नो वन हैज आंसर्ड मी. Okay, one of you has answered answer option B. Okay, that's correct. Answer option B is the correct answer here. Okay, एक चीज यहाँ पे मिस कर जाते हो तुम लोग. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट
देखो यहां पे ये 15 फैक्टर्स कैसे आया, मोस्ट ऑफ यू डू 3 into 5, परफेक्ट। ओके, सो a to the पावर मैं स्क्वायर लूंगा एंड b to the पावर 4 लूंगा। तो मुझे पता है इस नंबर के फैक्टर्स अगर मैं करूंगा तो 2 + 1 इंटू 4 + 1, मेरा आंसर 15 तो आ जाएगा। इज दैट ओके? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? and this is basically, this is not n, this is n square, right? देखो हमें 144 लेके करोगे तो भी चलेगा और 144 नहीं करना है तो n का वैल्यू क्या होगा, n must be square root, right? if we take the square root, this must be a into b square, and क्या फैक्टर्स आएंगे, 1 + 1 into 2 + 1, it has to be 2 into 3, 6, and most of the student get this as 6, और सबको पता होता है कि B या C में से कोई आंसर है, right? अब तुम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा चीज मिस करके गाइस, this is the case 1, okay, what is case 2? मैं यहाँ पे case 2 लिखता हूं, n स्क्वायर को तुम सीधे सीधे a to the power 14 क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? Is that okay, Krishna? Those who are watching live, guys, all of you understood this? मैं सीधे a to the power 14 रखता हूँ, 14 + 1 15, is it right? तो n का वैल्यू कितना होगा, a to the power 7 होगा, एंड डेफिनेटली इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 7 + 1, 8 फैक्टर्स, दैट इज द केस 2। तो आंसर क्या होना चाहिए था, 6 और 8, दैट इज आंसर ऑप्शन बी। ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है गाइस। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम्हें आता है, तुम्हें फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, तो कैट में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आ रहा है, तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ रिवर्स में पूछा है। इट्स नॉट कि तुम्हें बहुत कुछ ट्रायल एंड एरर करना है, यू आर डूइंग द सेम थिंग जो हम फॉरवर्ड में करते हैं, वही तुम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेके करो या तुम कुछ नंबर्स लेके करो, बट डू नॉट फॉरगेट टू टेक दीज टू केसेस। देयर आर टू वेज टू गेट 15, एक तो तुम 3 × 5 15 लाओ, या तो सीधे सीधे पावर में 14 रख दो प्राइम नंबर के और तुम्हें 15 फैक्टर्स मिल जाएंगे। Is it right? Is there any doubt? Okay, let's move to the next one. Try for this. This is quite tricky question, so I'll give you 2 minutes to think for this question. चलो सोचो और आंसर दो। A sum of factors. This is related to sum of factors. What was the formula for sum of factors of n? If not, by the time I can just revise the formula and you try to recollect that formula. A to the power p into b to the power q into c to the power r. What is the formula for sum of factors? Okay, just let me quickly tell you what the formula is. A to the power 0 plus a to the power 1 plus a square plus and so on till a to the power p. फिर तुम्हें सेम चीज ऐड करना है, b to the power 0, b का पावर 1 plus and so on b to the power q तक। then same चीज c to the power 0, c to the power 1, then c to the power r तक। Those who have joined late, will you be able to remember this formula? और इसका एक modified चीज है, ये geometric progression है और geometric progression का addition सबको पता होगा। It is a to the power p plus 1 minus 1 upon a minus 1. Then
बी टू दी पावर, एनीवेज तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, क्यू प्लस वन, बट डेफिनेटली ये सेकेंड वाला इजी रहता है हमेशा. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्या सिनारियो है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें कॉल लेना है. अपॉन बी माइनस वन, दिस द एडिशन. ओके, ये ऐड करने का ये शॉर्ट ट्रिक है. देन c to the power r plus 1, next power of c minus 1 upon c minus 1. डन. रह जाएगा ये दोनों चीजें याद. those who don't know. आंसर इज नॉट ए. ओके, टेल मी द नंबर. कौन सा नंबर मिला तुम्हें 40 to 50 के बीच में? कैन यू टेल मी द नंबर? दिस इज रियली ट्रिकी क्वेश्चन गाइज. ये अगर तुम्हें टैकल करते आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इट एंड यू आर बिल्डिंग द राइट अप्रोच. 48 इज द करेक्ट आंसर. बट तुम्हें यहां पे ये आंसर ऑप्शन नहीं देखा तुमने, तो ये पॉसिबल है. ओके, दैट इज पॉसिबल. तुम्हारा अप्रोच बिल्कुल सही है, बट दैट इज नॉट द आंसर. ओके, अभी ये लास्ट दूसरा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे कंक्लूड किया तुमने? ओके, नहीं कंक्लूड की 48 के अलावा कोई मिलेगा ही नहीं. एंड कैन यू जस्ट टेल मी हाउ डिड यू कैलकुलेटेड दैट 48? यू डिड इट रैंडमली, ट्रायल एंड एरर से किया, या कुछ देयर इज सम स्ट्रक्चर्ड वे टू गेट दैट 48? एनी आंसर? others please try it guys. Okay, you didn't read that. Okay, that's perfectly fine, but you need to be very careful like solving this type of question especially. And always doesn't matter guys तुम क्वेश्चन कैसा है, एक बार तुम्हारे चारों आंसर ऑप्शन पे ध्यान तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए. बिकॉज आंसर ऑप्शन से कभी कभी काफी तुम्हारे शॉर्टकट्स बिल्ड हो जाते हैं. तो ऑलवेज कीप अ हैबिट दैट एवरी टाइम यू लुक एट द आंसर ऑप्शंस वेरी केयरफुली. ओके, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, तुम बहुत लेंदी स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हो, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं आंसर ऑप्शन से देखते तो इजीली हो जाता. तो ऑलवेज कीप अ लुक एट द आंसर ऑप्शन. डोंट फॉरगेट टू डू दैट. दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. ओके, सो कैट में ये सब करना पड़ेगा, बिकॉज इवन इफ यू सेव 2 minutes 1.5 minutes समवेयर इन बिटवीन कॉन्ट क्वेश्चंस, 34 क्वेश्चंस है अपने पास. 124 सम होगा. इट मीन्स द नंबर will have good number of factors, so I reached that 48. Okay, that's a nice guesswork I can say. Okay, so shall I tell you a structured method now? देखो, गेस वर्क वगैरह तो है, तुम 40 से 50 के नंबर्स के बारे में सोच के देख सकते हो. तो ऑफकोर्स उसमें प्राइम नंबर्स है, उसके 2 फैक्टर्स ही आएंगे, काफी सारे प्राइम नंबर्स कट हो जाएंगे. मींस तुम ट्रायल एंड एरर से करने जाओगे तो ऑफकोर्स 5 मिनट दोगे तो तुम सारे आंसर ऑप्शन में से नंबर्स ढूंढ के भी निकाल सकते हो कि 1 मिल रहा है या 2 मिल रहा है, राइट? बट दैट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग. सो आई टेल यू द स्ट्रक्चर्ड वे टू डू इट. ओके, सो हाउ आई डू दैट मीन्स, जैसे हम पावर्स ऐड करते हैं 2 के और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट जगदीप? तो कैन आई डू दिस वे? 124 को पहले तुम मल्टीप्लीकेशन में लिखो. 124 को हम लिख सकते हैं 124 इंटू 1, और आई कैन राइट इट एज 124 इंटू 2. देन सॉरी, नॉट 124, सॉरी 124 को फैक्टराइज कर लो पहले. चलो, 124 का फैक्टराइजेशन आएगा, कितना आता है 124 का फैक्टराइजेशन बताओ? 4 से डिवाइड होता है, 4 इंटू 31. एम आई राइट? दोज हु आर वाचिंग नाउ गाइस, तुम्हें अभी तो पता होना चाहिए. टेल मी 4 कौन से पावर्स का एडिशन है?
4 must be addition of some powers, then right? अपना फॉर्मूला क्या था कृष्णा? a to the power 0, a to the power 1 plus a to the power 2 plus a to the power 3. so 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? 4 को डेफिनेटली लिख सकते हैं हम 3 to the power 0 and 3 to the power 1. अब तुम्हें ये नहीं आता है, ये ट्रायल एंड एरर नहीं चल रहा है, तुम कोई भी नंबर लो, 2 के पावर्स ऐड करके देखो, 2 to the power 0, 2 to the power 1, तुम ऐड करके देखो, स्टार्टिंग से फॉरवर्ड वे में ऐड करके रखो, तो तुम्हें पता रहेगा कि 4 को मैं एडिशन ला सकता हूँ. 31 के बारे में तुम सोच के बता सकते हो. 31 किसके पावर्स का एडिशन है बताओ? 31 कहां तक ऐड कर सकते हैं? जगदीप, कृष्णा, ऑल ऑफ यू गाइस क्विकली टेल मी. हाँ जगदीप, देखो अभी तुमने 48 पे पहुंचने के लिए जितना टाइम लिया, इससे कितना जल्दी तुम 48 पे पहुंच जाओगे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? 31 किसके पावर्स का एडिशन है? देखो पावर्स ऑफ 3 का एडिशन तो 31 नहीं आ रहा है. पावर्स ऑफ 2, तुम 2, 3, 4 ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े पावर्स ट्राई करने की जरूरत नहीं है. हार्डली तुम 5, 6, 7, 8 तक जाओगे ज्यादा से ज्यादा. राइट? एनी अदर पावर्स ऑफ 2? 31 के लिए 2 to the power 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 to the power 4. इज इट राइट? कृष्णा समझ में आया तुम्हें? ओके तो मैंने नंबर कैसे ट्राई करना चाहिए सुनो. n का वैल्यू बता रहा हूं मैं तुम्हें, नंबर का वैल्यू बता रहा हूं. द नंबर n मस्ट बी 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, मतलब मैं यहां पे लूंगा 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 4 एंड ऐसे तुम निकाल सकते हो 48. इज दैट इजी? वॉज दैट इजी? इज इट इजी टू कैलकुलेट? यस. कृष्णा ने एक और अच्छा ऑप्शन दिया दूसरा, वही मुझे चाहिए था बेसिकली तुमसे. 2 के पावर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बता देते हैं, 5 के पावर थोड़े से ऑड है. सुनो 5 के पावर्स अगर ऐड करते हो, 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1 प्लस 5 स्क्वायर अगर करते हैं तो भी 31 आता है. दैट मीन्स द नंबर कैन बी 3 to the power 1 इंटू 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 3. कौन से दो नंबर्स मिले हमें जगदीप? एक ही नंबर पॉसिबल है या दो पॉसिबल है? अंडरस्टूड? दो कैसे पॉसिबल है? दिस इज द 1 एंड दिस इज 2. क्लियर गाइस? बोथ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो क्या आंसर होना चाहिए? मोर देन वन सच नंबर एग्जिस्ट. uh, 48 एंड 75 के अलावा नहीं आएगा. देयर वोंट बी एनी नंबर बिकॉज देखो 31, देखो 5 के पावर्स का एडिशन 31 आ गया. अब तुम वापस से 7 के पावर्स का एडिशन 31 लाने जाओगे तो वो तो आएगा नहीं. इफ यू ट्राई फॉर 7 पावर ऑफ 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1 एंड सीधा 7 स्क्वायर तो 49 हो रहा है ना. इट इज नॉट मे बी, इट इज कंफर्म दैट इसके आगे नहीं आएगा. अरे क्लियर? देखो मैक्सिमम तुम 5 का स्क्वायर होता है 25, उसके आगे तुम क्या ही जाओगे. राइट? दूसरे नंबर्स में कहां पे आएगा? हमें प्राइम नंबर्स के पावर चाहिए. 5 के बाद आता है सीधे 7, 7 स्क्वायर तो 49 हो रहा है. फिर तुम उससे बड़े नंबर्स ट्राई करोगे तो कैसे आएगा? ऑल क्लियर? वी आर क्वाइट श्योर कि एग्जैक्टली 2 ही है, नॉट मोर देन 1, मतलब 2 ही है. इज इट क्लियर? कि अभी भी तुम्हें ये लग रहा है कि नेक्स्ट कोई नंबर मिलेगा? डू यू थिंक ऐसा कुछ मिलेगा? देखो पॉसिबिलिटीज उतने हैं नहीं. ओके
Let's try for the next one quickly. How many pairs of x and y exist such that the product of x and y and their HCF is 1080? Quickly take the possibilities, and I want you to take all the possibilities and finish it quickly at your own. You can assume the numbers as in terms of their HCF. This is quite structured way of doing it, is you can say, but thoda sa trial and error rahega. So try it properly. X and y, two numbers, and we don't know what is their HCF. You can take their HCF as 1. So product of x and y and their HCF has to be 1080. How many pairs of x and y exist such that the product of x, y, this product must be 1080? Quickly do it. Some of the numbers will be big. No, it need not to get into the sum of the numbers. Sum of the numbers क्यों निकालेंगे हम यहाँ पे? Why to get the sum of the numbers? See, can I say if HCF is H, that means H is the only common thing between X and Y. So can I say one number is HA and one number is HB? Is that okay? If I take it HA, H into A and H into B, where A and B are co-primes. Where A and B are co-primes. Is that okay? Have you understood this? So I can take x की जगह पे मैं यहाँ पे HA लिख देता हूँ, यहाँ पे HB लिख देता हूँ, यहाँ पे H, and this has to be 1080. So H cube into A into B. So I'll just find the numbers such that A and B are co-primes. Okay, H cube into AB must be 1080, and 1080 मैंने अभी लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन इसका. This is 2 cube. Sorry. What was the prime factorization of 1080? It is 27 into 4. Right. 3 cube into 2 cube into 5. Is it right? Yes or no? ओके, सो अभी हमें पता है ऐसे भी हो सकता है कि h क्यूब का वैल्यू इसमें से कोई है 2 क्यूब हो सकता है, 3 क्यूब हो सकता है. सो 2 क्यूब के साथ I can get A into B as 3 cube into 5, और इसमें कितने पेयर्स बनेंगे? A and B co-prime होने चाहिए. How many pairs are possible? One pair is 3 cube A and B as 5, and second pair is, इसमें से कोई 5 into 3 cube एक ही नंबर है and B is 1. So how many pairs are possible? 2. Right Krishna? Is it okay if I count it directly? क्योंकि ये लिखने में तो ज्यादा लेंदी जाएगा, बट श्योरली आई कैन से अगर मैं 3 क्यूब और 5 के दो कोप्राइम के पेयर बनाऊंगा तो मैं 1 रख के भी पेयर बना सकता हूं. सो देयर आर 2 पेयर पॉसिबल हियर. द सेम वे अगर h क्यूब का वैल्यू अगर 3 क्यूब है, देन आई विल बी हैविंग a into b के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे. 2 क्यूब into 5 मींस देयर विल बी 2 पेयर्स, राइट? 2 क्यूब into 5 into 1, ऐसे भी तो हो सकता है ना, a into b. So again I do have 2 possibilities for this.
2 + 2 मेरे 4 हो रहे हैं अभी तक. इज दैट ओके? एंड अभी देखो यहां पे 4 ही हो रहे हैं. आंसर ऑप्शंस काफी बड़े हैं. वन आंसर ऑप्शन कैन बी लाइक दिस. लिसन, अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे h³ इंटू ए इंटू बी, अगर मैं h को 1³ लेता हूं तो 1 भी तो हो सकता है, और a इंटू बी 1080 होगा. इज इट राइट? अब 1080 के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या है? 2³ इंटू 3³ इंटू 5. तो अभी मेरे पास a के लिए 1 भी रख सकता हूं, या फिर इसमें से कोई एक रख के बचा हुआ b रख सकता हूं. सो हाउ मेनी पेयर्स विल बी पॉसिबल? डायरेक्टली टेल मी हाउ मेनी पेयर्स विल कम हियर. So I hope all of you will be able to get that. There will be 4 pairs possible here. 4 pairs समझ में आया? a का वैल्यू इसमें से कोई हो सकता है, या तो a का वैल्यू तुम 1 भी ले सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली मैं b को मल्टीप्लीकेशन में जो भी बच जाता है उतना ले लेंगे. तो अभी तक मेरे कितने पेयर्स हो रहे हैं? 4 + 2 + 2. हाउ मेनी पेयर्स आई गॉट अप टिल नाउ? इज इट? आंसर इज 8, और 8 से ज्यादा तुम पेयर बना सकते हो. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी लेफ्ट? आई वॉन्ट यू टू टेल मी गाइस, क्विकली टेल मी, कोई पॉसिबिलिटी बचा है क्या? इफ यू और शाल आई मार्क द आंसर एज 8? 8 लुक्स पॉसिबल आंसर. नो, इट्स नॉट 8. यू आर मिसिंग समथिंग, और वापस से वही मिस्टेक हो रही है जो हम पहले भी कर चुके हो. तुम एक बार काउंट करते करते. अप टिल नाउ 8. ओके, सो कृष्णा, कैन यू टेल मी सम अदर पॉसिबिलिटी वेयर h³ का वैल्यू कुछ दूसरा हो सकता है? देखो हमने क्या क्या ट्राई किया. h का वैल्यू, h³ का वैल्यू 3³ हो सकता है, 2³ हो सकता है, 1³ हो सकता है. एक किसी ने ट्राई नहीं किया 2³ इंटू 3³. जब 2³ और 3³ तुम ट्राई कर रहे हो, तो मैं इसको 2 इंटू 3 ब्रैकेट का क्यूब भी तो ट्राई कर सकता हूं ना. 6³ मैं ट्राई करता हूं, एंड दिस इज 5 इंटू 1. तो इसके साथ ज्यादा पेयर नहीं बनेंगे. देयर विल बी ओनली 1 पेयर. Yes, so there will be just 1 pair. So answer 8 नहीं है. Be very careful. Answer is not 8. Answer is 9 over here. All clear? Okay, so most of the questions are done now. There will be few easy questions. So means easy in the sense, even if the questions come on the similar front, you will be able to manage now. So because we have practiced sufficient questions till the time. So let's move to the next one. Try this one. And these are typical question from LCM HCF. Not a big deal. ये सारे snap pattern के question भी है. तुम इसे बोल सकते हो. Keep repeating on the other MBA entrance exam as well. So find the smallest number that leaves remainder 4 on the division by 5. How many of you remember the direct shortcut to solve this question? Typical LCM HCF question. Remainder हमें 4 चाहिए when divided by 5. Remainder हमें चाहिए 5 on division of 6. Remainder 6 चाहिए on division of 7. So when divided by 5, 6, 7, 8 and 9, remainder must be 4, 5, 6, 7 and 8. Hopefully किसी को याद आ गया होगा शॉर्टकट ये. Answer for this question is always, look at this difference. This difference is 1. Divisor and remainder का difference यहाँ पे 1 है. And always answer for such question is LCM minus that difference. So you need to calculate LCM of these numbers.
So if you calculate LCM of these numbers, 5 and 6 का LCM होगा 30, 30 into 7, 210 into 4, 840 into 3. It should be 2520 minus 1. Answer is 2519. All clear? That's the typical question from LCM HCF. अगर नहीं पता है तो ये याद होना चाहिए guys. Keep this question type in mind. Really important. Then next one. Try for this. How many pairs of positive integers x and y exist such that HCF of x, y is equal to 35 and sum of x and y is 1085. तो x और y को हम ले सकते हैं. x को लो, HCF हमें पता है, so HCF 35 है, so it has to be 35a and I can take y as 35b. That's the quite structure way जो हमने अभी यूज किया था. All clear? And the sum of these numbers is x plus y is 1085. So I can write 35x plus 35y must be 1085. We divide this, x plus y must be equals to 35 3s are 35 3s are. X plus y is 33. How many pairs of positive integers x and y exist such that HCF of x and y is 35? चलो बोलो, how many pairs are possible? एडिशन 33 होना चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर्स हमें चाहिए. So it can be 1, what is your answer Krishna? बोलो जल्दी. 132. Sorry, my mistake, it is not 33, it should be 31, right? 1 and 30. Shilpa, why 12? How it is 12? There will be more than 12 possible. 229, 328 and so on. अगर मैं जाता हूं तो हमें मिलेगा 15 and 16. इसके बाद मत जाओ, 16 15 करोगे, दिस विल रिपीट. ओके, हमें यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं बनाना है, हमें सिर्फ x और y दो नंबर्स है गाइस. One thing I need to correct is it should not be x, it should be a and b लिखना चाहिए था मैंने actually, क्योंकि हमने x और y को नंबर्स लिया है. This is x plus y, this is 35a plus 35b and this is a plus b. तो a और b के पॉसिबल पेयर्स अगर तुम देखोगे तो 15 तक बनेंगे. आंसर मस्ट बी 15. Understood this part? That was an easy, it's not tough at all. Simple. You need to just understand how to do this part. That is quite important.
और जब भी तुम्हें SCF रिलेटेड क्लू आएगा तुम इसको SCF इनका मल्टीपल रहेगा एंड A एंड B मस्ट बी को प्राइम. A and B must be co-prime, but the problem is मुझे हर बार co-prime numbers मिल रहे हैं क्या guys? Shall we check once if all these numbers are co-prime? Because अगर कुछ cancel हो जाते हैं तो आंसर हमारा 12, 30 आने के chances हैं. So what I'll do, I'll write the numbers 1, 30 to 29. Okay, those who got the answers, Krishna, have you checked for the co-primes? सारे co-primes मिल रहे हैं क्या? 328 that is co-prime, that's perfectly fine. 427 मिल जाने चाहिए वैसे तो. 526 co-prime again. Co-prime in the sense कुछ भी common नहीं होना चाहिए. Okay, prime factors में 625 co-prime. 724 again co-prime. 823 is co-prime. 922 co-prime. 1021 co-prime. 1120 co-prime. 1219 co-prime. 1318 co-prime. 1417 co-prime. After that 1516 co-prime. Perfectly fine. It is 15. Answer is 15 guys. I was just checking for the co-primes. All are co-primes, right? चलो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर द डे. चलो क्विकली फिनिश इट एट योर ओन एंड आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी अभी के आगे के कोई भी क्वेश्चंस. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x and y exist such that SCF of xy plus LCM of xy is 91? How to do this? X and Y. Is LCM plus. Okay. Let's take this number as AH, this as BH. SCF is H and LCM will be A into B into H, where A and B are co-primes. This is important. A and B are co-primes. Okay, so let's try for this. SCF is H plus LCM कितना है? A into B into H, and this has to be 91. Representation is important, that's it. So 1 plus AB must be 91. How many pairs of positive integers x and y exist? बोलो जल्दी, कितने पॉसिबल पेयर्स हैं? h का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो ए बी मस्ट बी 90. अगर 90 है तो कितने पेयर्स पॉसिबल है? 90 के साथ हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? 2 into 3 square into 5. How many pairs of co-prime are possible? There must be 4 pair possible, right? Are you getting this? How 4? Already हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं. I can take A as 1 and this B as 90. A as 2, A as 3 square, A as A के लिए मेरे पास 4 चॉइस रहेंगे तो मेरे 4 पेयर्स बनेंगे, right? Then this is 13 into 7. Okay, so I can take H as 7
यस, सो कृष्णा 7 के साथ h अगर 7 है तो ए बी का वैल्यू कितना होगा? a इंटू बी मस्ट बी 12. इस 2 स्क्वायर इंटू 3. तो इसके साथ कितने पेयर्स बनेंगे? एक तो मैं a को 2 स्क्वायर रखूंगा. देखो इसके साथ 2 ही पेयर बनेंगे. इज इट राइट? जस्ट लेट मी एक्सप्लेन क्विकली. a इंटू बी के साथ पहले कौन से पेयर बने थे? a और 90. देन 2 इंटू 45. देन हमने कौन सा बनाया था? 9 इंटू 10. और दूसरा हमने बनाया था लास्ट वन 5 इंटू 18. इसके साथ 4 पॉसिबल थे. इसके साथ 2 ही क्यों आए कृष्णा? वाई नॉट 3? बिकॉज यहां पे मैं 4 इंटू 3 लिखूंगा या तो 12 इंटू 1 लिखूंगा. देर इज ओनली 3 इंटू 4 नहीं लिखेंगे बिकॉज सिक्वेंस चेंज करके तो नहीं बनाना है. क्लियर? अंडरस्टूड दैट why I have took that 2 only. इसके साथ 2 पेयर्स आएंगे एंड एट लास्ट अभी तक मेरे 6 पेयर्स हो गए. अगर मैं h को 13 लेता हूं तो a इंटू बी मस्ट बी 6. तो इसके साथ भी मेरे 2 पेयर्स आएंगे. तो 2 प्लस 2 प्लस 2 माई आंसर शुड बी 8. Is that okay? So let's move to the next one. So questions थोड़े से ज़्यादा है. We are not left out with too much questions. So let's finish it and आज ही खत्म कर लेते. चलो. So sum of two numbers x and y is 1050. What is the maximum value of SCF? That is the easy question. This is x plus y. Simple common sense. Basically what I can do, take this number as 525 and 525. दोनों नंबर्स को सेम लेना नहीं है, ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है. तो आंसर हैज टू बी 525. That was simple. Try for this one. The sum of the two non-coprime numbers added to their SCF gives us 91. Sum of two non-coprime means SCF is not 1. How many such numbers are possible? This is quite easy and अभी हमने जो किया ना उसी वे में तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. Let's take two numbers as n1 n2 and I'll take HA and HB. And we know the sum of two non-coprime numbers added to their SCF means it is n1 plus n2, as good as the previous question actually, right Krishna? Plus their SCF must be 91. Values भी same है, सिर्फ SCF 1 नहीं लेना है. Okay, so HA plus HB plus H must be 91. So H common, A plus B plus 1 is 91. So H must be 13 or 7. दो ही पॉसिबिलिटीज है. H अगर 13 है तो A प्लस B है, बट वो H 13 है. 4 आ रहा है तुम्हारा आंसर. तो A प्लस B मस्ट बी 6 एंड H अगर 7 है तो A प्लस B मस्ट बी 12. तो यहां पे हमें कोप्राइम नंबर्स चाहिए तो मैं ले सकता हूं 1 5
2 4 तो नहीं चलेगा, 3 3 भी नहीं चलेगा, 1 और 5 there is only one possibility, right Krishna? It is addition, and this must be 1 11, then 2 10 नहीं चलेगा, 3 9 नहीं चलेगा, 4 8 नहीं चलेगा, 5 7 हमें चल जाएगा, 6 6 नहीं चलेगा. So what is the answer? Is it 4 or 3? This one is quite tricky. तुम्हें co-prime numbers बनाने हैं, okay? A and B must be co-prime. So your answer should be C ना? Yes. यहां पे गलती मत करो, यहां पे co-prime का पेयर ही नहीं बन रहा है दूसरा. Let's talk about the next one. चलो quickly finish it. There are two numbers such that, just ये थोड़ा सा variable में पूछा है, that's it, nothing tough here. There are two numbers such that A is greater than B. HCF of A is H, A and B is H, LCM of A and B is L. A को मैं लेता हूं HX and B को मैं ले रहा हूं HY. So LCM must be H into X into Y. Then what is the value of what is the LCM of A minus B and B? Okay, what is A minus B here? B तो हमें पता है HY है. What is A minus B? A minus B will be H times of X minus Y, and we know that A is greater than B, that is already given over there. तो हमें कुछ sequence तो change करने की जरूरत नहीं है. There is a single possibility. So हमें चाहिए LCM of B HY and A minus B, that is H into X minus Y. X and Y are co-prime numbers. Okay, but anyways उसका तो हमें कुछ काम नहीं है. इसका LCM कितना आएगा? It will be H into X minus Y into Y. So basically it will be HY into X minus Y. Okay, so what is the value of X minus Y? I can get X minus Y as बस यहाँ पे ही घुमाया हुआ है, that's it. A minus B upon H लिख सकते हैं यहाँ पे, और HY का वैल्यू तो B है, and this can be written as A minus B upon H. Look at the answer option. B into A minus B upon H. That is answer option C. Hopefully it's clear. It's not that tough. It's a simple adjustment based question, nothing else. Right, the other way you can put some values and get it done. या तो तुम कुछ values try करके भी कर सकते हो. It's not compulsory. मैंने ऐसे किया तो ऐसे ही करना चाहिए. चलो, few last question for the day and quite easy. Last two questions. और ये बिल्कुल easy questions है. 6 different sweet varieties of 6 different sweet varieties count 32, 216, 136, 88, 184, 120 were ordered in particular occasion. So they need to packed in such a way that each of the box of the same variety
the sweet and the number of sweets in the each box. Also same, what is the minimum number of boxes required? What do you need to do? That's a simple question. Basically पहले होना चाहिए था बहुत. What is the SCF? Can you calculate this? What is the SCF? This is 6 cube. That means this is divisible by 8, 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 this is divisible by 8. SCF must be 8, right? So simply you can calculate this as 4, that's 27. $56. Two, three, this as 15. So this comes out to be 50. Plus 32, 43. It has to close to 100. That is 97. Definitely. That was an easy. So one last question for the day, and again you can manage at your own. In a large school auditorium, the student may sit What's the logic here? If teacher makes a rows of 16, there will be 12 students left. Means it is divided by 16, remainder is 12. This difference is 4. If it is divided by 24, 20 left, again the difference is 4. So you need to take the LCM of 16, 24, 25 and 30. LCM of this number minus 4. That's the answer. That's as simple as that. LCM minus difference. So what will be the LCM? This is 2 cube into 3. This is 2 to the power 4. This is 5 square. This is 3 into 2 into 5. Nothing to do with this. That's perfectly fine. So 2 cube हमें लेना पड़ेगा. एक 3 लेना पड़ेगा बस इधर से भी ले सकते. 2 cube into 2 to the power 4 into 5 square into 3. 2 square into 3 is, that is 1200 minus 4. Right, so answer is 1196. Right guys, that's it for the day. Hopefully you enjoyed the session. So those who are willing to go for the plus subscription of Unacademy, do not forget to use this code SHAM1 to avail 10% of discount. And you can also just download the Unacademy learning app and attend my special session that is free of cost. So I do take the special session on Unacademy daily at 6 PM. You can also attend that session. And do not forget to subscribe to this channel and join us on Telegram, that is CAT4MBA, to get the PDF notes of each and every session that we conduct here as well as on Unacademy platform. That's it for the day guys.